In the today's episode of the Income Tax Decoded, we'll be talking about the luxury hotel segment and the tax implications that follow in this luxury hotel segment. And it's not just a small dispute that we are talking about. We are talking about the Grand Hyatt hotel chain, and it's a very well-known chain in India as well as the global hotelier markets. We will also learn that about the multi-million rupee tax demands, a legal concept called as permanent establishment, which have been made a very significant part of this whole case law. And third thing that would be why the income tax demanded from Hyatt rupees 23.75 crores in taxes. And if you say so, Hyatt Dubai said that we operate from Dubai only and just have strategic control over Indian hotels. But Supreme Court told that Hayat, you are actually taxable in India. So even though you operate from Dubai, you are actually taxable in India. We will be learning all about this. So I am your host, CA Pratham Magedwala, and let's dive into it. So it's the year 2008. Matlab, we will be talking about in the 2008. Now Hyatt International Southwest Asia Limited is a company based in Dubai. For this video purpose, we will call that thing a Hyatt Dubai. So Hyatt Dubai signed a strategic oversight service agreement, that is SOSA. तो उन्होंने साइन किया स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट सर्विस अग्रीमेंट्स विद होटल्स इन मुंबई एंड दिल्ली. तो हयात दुबई ने ये एक सर्विस अग्रीमेंट साइन किया. बट इफ यू सी द hotels that are in Mumbai and Delhi are predominantly owned by एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड. ये जो होटल्स थी जिसके साइड तक ये सोसा साइन हुआ था, वो एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड ओन कर रहा था. नाउ इफ यू मूव सोसा क्या होता है, सो व्हाट इज दिस सोसा? सो सोसा इज अ लॉन्ग टर्म 20 years contract which can be extendable for 10 years more. तो 20 years का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है which can be have a possible extension of 10 years more, and it's meant to ensure that this hotel is not just good but up to the international higher standards. So the main purpose of this सोसा was that ये जो hotels है, जो मुंबई मुंबई और दिल्ली में जो hotels थी, उसको हयात के इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स के लिए गाइडेंस देना और उसका पूरा स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू करना. तो वो यही था सोसा. नाउ इफ यू मूव फॉरवर्ड, तो हयात दुबई Hyatt Dubai would be providing branding guidance. The second thing they would be providing would be the strategic direction. And the third thing that they would be providing would be operational advices. And they would be providing this from their headquarters based in UAE, that is Dubai. तो ये जो तीन सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी वो दुबई से ही वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे. एंड इफ यू सी तो हयात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक दूसरी कंपनी थी, वो हैंडलिंग डे टू डे ऑपरेशंस होटल मैनेजमेंट अंडर अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ये जो हयात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, ये जो अपनी हयात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, वो एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डे टू डे होटल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करती थी इन इंडिया. नाउ इफ यू सी हयात दुबई सेड दैट वी आर द स्ट्रेटेजिस्ट. हम लोग तो सिर्फ स्ट्रेटेजिस्ट है, we are not the operators, and since we don't have any office in India, therefore we are not able to be taxed here in India. तो ये था हयात दुबई का मेन. बट द टैक्स डिपार्टमेंट स्मेल्स अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ओवर हियर. उनको लगता है कि यहाँ पे एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लग जाएगा पूरे का पूरा. So the income tax department started getting closer, and they said that this isn't just branding advice on the overseas. मतलब ये बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, ये जो हयात दुबई जो प्रोवाइड कर रहा है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द ब्रांडिंग एडवाइस दैट दे आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम द ओवरसीज. हयात दुबई एक्चुअली एम्बेडेड इनटू दिस होटल्स. मतलब हयात दुबई प्रॉपर्ली इस ऑपरेशंस में, इस होटल के ऑपरेशंस में प्रॉपर्ली एम्बेडेड है. And why did they say that? Because the SOSA gave Hyatt Dubai. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज द सोसा गेव हयात दुबई 5 important things. द फर्स्ट थिंग दैट द सोसा गेव दैट द राइट अपॉइंट एंड सुपरवाइज द जनरल मैनेजर्स एंड की एग्जीक्यूटिव्स. मतलब ये सोसा के थ्रू हयात दुबई इंडिया के अपॉइंट कर सकता है, सुपरवाइज करता है जनरल मैनेजर्स एंड की एग्जीक्यूटिव्स को वो अपॉइंट कर सकता है. Second thing that SOSA gave was the authority over the HR policies, procurement rules, guest policies, pricing, marketing, and branding. And this overall captures the whole operational part of the Indian hoteliers. The third thing that this SOSA gave was to power to manage the operational bank accounts of the Indian hoteliers. The fourth was the freedom to send in its own employees to work in India without hotel owners' approval. So ये चार चीज. And fifth thing was the payment based not on fixed consultancy fee, but as a percentage of hotels revenues and profits. तो ये सोसा ने क्या किया? तो ये पांच चीजें दी. The last one is very important. So payment based not on a fixed consultancy fee, but as a percentage of hotels revenues and profits. And if we move forward, the income tax department said that that's not consultancy, and that's actually running the whole business. मतलब ये कोई consultancy थोड़ी हुई. It's actually running the whole business from outside India. And under the Indo UAE DTAA, that means a fixed place and permanent establishment, giving
इंडिया द राइट टू टैक्स हायर दुबई's प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि ये जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो ये कोई कंसल्टेंसी थोड़ी है, ये तो पूरा का पूरा बिजनेस ही आप रन कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई इंडिया हैव द राइट टू टैक्स द हायर दुबई's प्रॉफिट फ्रॉम दिस होल कॉन्टेक्स्ट। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लॉ। तो डीटीडब्ल्यू क्या होता है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? So if you see Article 5 subsection 1 of Indo-UAE DTAA says that permanent establishment means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. And keywords over here are fixed place, कोई भी fixed place होनी चाहिए, so it's some identifiable location even shared that is used for business वो होनी चाहिए, and business is carry on होना चाहिए, not just one time visit but real continuous work should be going on in there, तो वो अपना fixed place of business हो जाता है। And if you see treaty also list examples के क्या क्या चीजें permanent establishment हो सकती है, so in it first comes the office, second comes the branches, the third is the factory, and the fourth is the very much important, that is services performed in other country for more than 9 months। कोई भी अदर कंट्री में 9 मंथ से ज्यादा की सर्विसेज अगर कोई भी एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे आपका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज पी बन जाता है। And if we move forward, and the courts over the years in the cases like Formula One World Champions Limited have made it clear that exclusive ownership of the space is not required। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ओनर होंगे तो ही यू आर एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द स्पेस, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। The second thing was even a shared temporary space can be a PE if you have a disposal over it, meaning you control it for your core business। मतलब अगर आप उसको core business के लिए यूज कर रहे हो then even shared or temporary space can be your PE। एंड व्हाट मैटर्स इज द सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो ज्यादा मैटर करता है ओवर द फॉर्म, कि क्या फॉर्म में है वो मैटर नहीं करता, बट द सब्सटेंस दैट द फाउंडेशन बिहाइंड इट द होल द फॉर्म इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड अगर हम देखें तो सो द लीगल टेस्ट इज नॉट do you have an office in your name, but the legal test actually is do you in reality run your business through a place in that country। तो ये एक्चुअल टेस्ट है। एंड इसके सामने हयात के आर्गुमेंट्स क्या क्या है, लेट्स एनालाइज दैट। तो ग्रैंड हयात ने बोला वी वर्क फ्रॉम दुबई, हम लोग दुबई से काम कर रहे हैं, एंड आवर सर्विसेज आर स्ट्रेटेजिक एंड नॉट ऑपरेशनल। हम लोग सिर्फ स्ट्रेटेजिक एडवाइसेस दे रहे हैं, हम कोई ऑपरेशंस में ध्यान तो नहीं दे रहे, हम लोग ऑपरेशनल लेवल पे तो नहीं है। तो सेकंड थिंग दे सेड दैट वी हैव नो फिक्स्ड ऑफिस ब्रांच और डेडिकेटेड स्पेस इन इंडिया। हमारे पास कोई भी ऐसी फिक्स्ड ऑफिस ब्रांच या फिर डेडिकेटेड स्पेस है ही नहीं इंडिया में। The third thing they said that our employees' visits to India were short and didn't exceed the 9 month threshold in Article 5 subsection 2। तो हमारे जो एम्प्लॉयज थे, हमने जो बात की अभी डिस्कस किया कि 9 मंथ से ज्यादा अगर कोई भी एम्प्लॉय इंडिया में स्टे कर रहा है तो वो पी बन जाता है, बट हमारे एम्प्लॉयज तो यहाँ पे 9 मंथ से ज्यादा रह ही नहीं रहे। द फोर्थ पॉइंट इज दैट Hyatt India Private Limited, a separate company, runs daily operations and you can't attribute their activities to us। मतलब ये जो हयात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो अपने खुद के एक्टिविटीज कर रहे हो, उनके एक्टिविटीज आप हमसे लिंक मत करवा दो। एंड इसके सामने टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या काउंटर है। सो टैक्स डिपार्टमेंट सेड दैट सोसा शोज यू टू कंट्रोल द होटल स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, पॉलिसीज, मार्केटिंग, प्राइसिंग ऑल इन योर हैंड। मतलब जो भी ऑपरेशनल काम थे वो आप कंट्रोल तो कर ही रहे हो ना थ्रू द सोसा। सेकंड थिंग दे सेड दैट व्हिच इज वेरी के आई थिंक कि यहीं से पूरा जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का वुड हैव फेवर्ड इन द टर्म्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। Profit based fees means your income is tied to the hotel performance and you are sharing in the business, not just giving guidelines। मतलब उनको जो फीस मिल रही थी हयात दुबई को वो प्रॉफिट बेस्ड थी, मतलब इंडिया में जितनी बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा उतनी फीस उनकी ज्यादा होगी। देयर मेन प्राइमरी इनकम वाज डेट विद द ऑपरेशंस ऑफ इंडिया। एंड ये कोई फिक्स कंसल्टेंसी फीस नहीं थी, एडवाइसरी फीस नहीं थी, इट वाज जस्ट के जितना जितना बिजनेस बढ़ेगा उतनी फीस एंड प्रॉफिट्स दे वुड बी गेटिंग इंक्रीज। थर्ड थिंग वाज the hotels themselves are your place of business even without your name on the lease। ये उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो होटल है वही तुम्हारी प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसमें आपका लीज में नेम नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस प्लेस इज ओनली योर प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड फोर्थ थिंग दैट frequent employee visits across multiple years shows a continuous presence even if no single person exceeds cross the 9 months। मतलब ये जो frequent employee visit कर रहे थे इंडिया में वो दिखाता है दैट यू हैव कंटिन्यूअस कंट्रोल ओवर द इंडियन ऑपरेशंस। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एम्प्लॉय 9 महीने से ज्यादा रहे, बट द कोर्ट एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलाइड मेजरली ऑन द डिसीजन ऑफ द फार्मूला वन। फार्मूला वन के केस में क्या हुआ था, सो फार्मूला वन के केस में ये हुआ था कि 3 डेज का जो रेसिंग ट्रैक था उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया था कि ये जो रेसिंग ट्रैक है वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही है। एंड देन द 20 years ऑफ कंटिन्यूअस कंट्रोल एट होटल श्योरली काउंट्स। मतलब इनकम टैक्स बोलता है अगर 3 दिन का जो ये सिर्फ रेस ट्रैक बनाया था उसको हम भी मान लेते हैं, एंड 20 years, एक 20 years की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, एंड उसमें तो जो आप होटल को कंट्रोल कर रहे हो वो तो श्योरली काउंट हो ही जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी। एंड लेट्स मूव टू सुप्रीम कोर्ट डिबेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला,
So Supreme Court said that Hyatt had a strategic and operational control over these businesses. The second thing they said that Hyatt could appoint executives, manage accounts, and make policy decisions. मतलब हयात ये सब चीजें कर रहा था in the Indian hoteliers. And the third thing they said that the role was not preparatory or auxiliary. It was a core business. मतलब ये कोई role ऐसा side वाला नहीं था. It was a core business of Hyatt Dubai. एंड जो ऑपरेशनल पार्ट्स थे उसमें ही इन्वॉल्व थे। फोर्थ वन जो हमने बात भी की, प्रॉफिट बेस्ड फीस शोज द डायरेक्ट कमर्शियल स्टेक, मतलब प्रॉफिट बेस्ड फीस थी कि जितना बिजनेस इंडिया में बढ़ेगा उतनी फीस उनकी बढ़ेगी। सो दिस शोड दैट हाँ इनका पी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द कोर्ट आल्सो डिसमिस्ड हायर्स नो फिक्स स्पेस एग्रीमेंट, सेइंग कंट्रोल ओवर होटल प्रीमाइसेस इवन शेयर्ड काउंट्स एज डिस्पोजल ऑफ स्पेस। मतलब हयात बोल रहे थे कि हमारे पास कोई फिक्स स्पेस तो है नहीं इंडिया में, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कंट्रोल कर रहे हो इतने सारे होटल्स को, so that deems that you have a place of business in India. Second thing, it was said that it rejected the 9 month defense, noting that the treaty counts aggregate business presence and not just individual employee stays. मतलब कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखा जाएगा क्या, या फिर सिर्फ एम्प्लॉयज विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। The third thing they said that it also brushed aside separate entity defense, saying legal form doesn't override the economic substance। मतलब ये जो लीगल फॉर्म है वो इकोनॉमिक सब्सटेंस और इकोनॉमिक बेस को तो नहीं override कर लेगा। And the fourth was the in the court's view the hotel premises were clearly Hyatt's fixed place of business in India and satisfying PE test। मतलब ये चार चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोली, and that's why the verdict and the text was the Supreme Court on July 24, 2025 said that Hyatt dismissed all the Hyatt's appeals and said that Hyatt has a fixed place PE in India under Article 5 subsection 1. The second thing they said that income from the SOSA is attributable to that P. And the third thing that India can tax that income under Article 7 subsection 1 of the DTAA। तो ये तीन चीजें इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आई। एंड इफ यू मूव फॉरवर्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, डायरेक्टेड हयात टू पे ₹23.75 करोड़। तो सुप्रीम कोर्ट ने हयात को 23.75 करोड़ का टैक्स पे करने को बोला। एंड इफ यू सी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो आए नहीं, मतलब इन द कंसिडरेशन ही नहीं आए इन द सुप्रीम कोर्ट। तो वो मेजरली क्या था, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो एक ही मेजर क्वेश्चन था कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एंटायरली ऑन वेदर हयात हैज अ पी, मतलब पूरा का पूरा फोकस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के डिस्कशन पे ही लग के एक ऐसा भी एक ओवरव्यू ले सकते थे, बट द कोर्ट कुड हैव एग्जामिन्ड अ डिफरेंट एंगल भी ले सकते हैं दैट वेदर द फीस हयात अर्न्ड अंडर द सोशा शुड हैव बीन ट्रीटेड एज रॉयल्टीज। मतलब ये जो हयात ने अर्न किया वो रॉयल्टीज के थ्रू भी, रॉयल्टीज के द्वारा भी टैक्स किया जा सकता था कि नहीं। सो रॉयल्टीज अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडो यूएई डीटीडब्ल्यूए। तो ये मेजर डिस्कशन आके खड़ा हो गया कि ये वाला पॉइंट तो कंसिडरेशन में नहीं आया। एंड इफ यू सी द हयाज बिगेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन वाज क्या, उनका बिगेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन क्या था, तो इट वाज शेयरिंग इट्स ब्रांड, उनको ब्रांड शेयर करना। सेकंड वाज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट दे वर हैविंग, ऑपरेशनल मैनुअल्स एंड ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हयात दुबई के पास थे, वही उनका बिगेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन था। तो इट सम्स आउट के ये थोड़ा थोड़ा बहुत रॉयल्टी जैसा ही दिख रहा है, but this wasn't even considered. So, however, this issue was put before the court. The Delhi High Court had already held that the services weren't royalties, and the finding was left if you say why does this matter, क्या royalty का matter इसमें क्यों क्यों आ गया, because taxing as royalty would have avoided complex fee debates। मतलब ये जो पूरा permanent establishment वाला जो debate शुरू हो गया, it would have resolved, मतलब ये बहुत simpler way हो जाता to get out of this debate। Then the second would be the profit attrition issues, and the third was challenge of taxing a PE when the global entity is in loss। मतलब जो हयात दुबई थी वो लॉस में थी, बट सुप्रीम कोर्ट said that it doesn't matter, वहां पे लॉस है नहीं है, we are we are liable to tax the income that arises from Indian operations। And it could have been a simpler and a more predictable approach, but it was pursued। मतलब ये जो अप्रोच था वो बहुत सिंपलर या फिर एक प्रिडिक्टेबल अप्रोच था कि इस तरह से अगर जाते तो इट वुड बी हैव बीन वेरी गुड, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने पीई वाले परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाले डिस्कशन पे ही डिसीजन दिया, एंड दैट्स हाउ द होल मैटर अनफोल्डेड। सो की लेसन्स फ्रॉम for the global companies and us as the tax professionals are, the first is redesign the structures and contracts to limit operational control। मतलब जितने भी क्लियरली सेपरेट द स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट फ्रॉम द डेली ऑपरेशन। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट है तो उसको स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट ही रखो एंड डेली ऑपरेशंस में उसको इन्वॉल्व मत करो। द सेकंड वाज अवॉइड गिविंग फॉरेन हेडक्वार्टर्स हायरिंग राइट्स लोकल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। मतलब जो भी फॉरेन हेडक्वार्टर्स थे उनको ऐसी ऐसी सब चीजें मत दो जिससे वो ऑपरेशंस कर रहे हैं वैसा लग जाए। थर्ड वाज कीप agreement short term and renewed periodically to reduce permanency risk। मतलब 20 years का कॉन्ट्रैक्ट था, that's why it was held कि by 20 years बाद you are entirely controlling the operations of the whole hotel chain।
तो अगर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म रहेंगे एंड उसको रिन्यू पीरियोडिकली करते रहेंगे, देन इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग. द सेकंड थिंग वाज control presence and pricing with strong documentation. So they said that the restrict the foreign personal visits to short, well-defined engagements under the Indian entity supervision. Second was avoid exclusive space or resources for the foreign staff. Third was under use the robust market aligned transfer pricing models backed by the strong documentation. तो ये सब चीजें उनको बोली गई. ये सब एक चीज एक लेसन की तरह अपन ले सकते हैं. थर्ड was a proactively engage with the tax authorities. So they say, so the lesson over here is seek advanced links or a pass bilateral or unilateral to secure clarity on PE and transfer pricing rules. Second would be the maintain transparent communication with Indian tax authorities to manage expectations. And the third would be use proactive engagement to minimize the litigation risk and ensure the long-term certainty of the things. So this was all. And for more such deep and insightful research about the case laws, do visit the council wise and to get 10 lakh plus judgments and AI powered legal research, do visit the councilwise.com and to get the link of this whole order, do get into the description box and click on the link given there. Thank you.